is something coming from the PMO pushing us, asking us on what we are doing as far as the green hydrogen is concerned. That is from the Indian PMO. As by embracing, we address global challenges while fostering inclusive growth. Increasing urbanization, disposable incomes, and technological advancements are driving the demand for chemicals across sectors. In the context of India, again, the chemical sector holds immense importance. It contributes significantly to the country's GDP, creating employment opportunities and driving economic growth. The sector acts as a catalyst for various allied industries and helps in building a robust manufacturing ecosystem. Furthermore, it plays a vital role in India's self-reliance and government's Make in India initiative by providing essential raw materials and intermediate products. For example, in a defense product, or missile or artillery, there is a chemical involved. So again, from a defense perspective, India is getting sustainable. Earlier, we were dependent upon our propellants coming from other OEM countries like Russia and maybe Austria. But now, in the last 5 years, the government of India has ensured that all the OEMs have to have a production base in India in an offset mechanism. So it is again making us more relevant in terms of focus on being relevant and focus getting a basis of Atmanirbhar Bharat. India is the sixth largest chemical producing country in the world and the third largest producer in Asia. The Indian government's focus on ease of doing business, infrastructure development, and policy reforms has created an enabling environment for the industry. The chemical industry of India is a major industry in the Indian economy, and as of 2022, you will be surprised that it contributes 7% of the country's GDP. India's rank in the global export is 14th for chemicals and 2.5% contribution to the global chemical sales worldwide. So India exports chemicals and chemical products to more than 175 countries, with key export destinations like China, USA, Brazil, Netherlands, Saudi Arabia, Indonesia, UAE, Japan, and Germany. During 2021, of course, China was the largest importer of chemicals from India, valued at 2.4 billion, followed by USA with imports of 2.2 billion. And the targets that we internally have put up in India is that we want to become the largest exporter of chemicals to the US by 2025. In FY22, India's total chemical products exports were valued at US $24.31 billion, an increase of 38.67% on a YOY basis. In FY23, until September 2022, exports of major chemicals and petrochemical products stood at US $8.6 billion. The chemicals and petrochemicals market in the country is worth US $178 billion and is expected to reach US $300 billion by 2025. As we look ahead, the chemical sector will continue to play a vital role in shaping the future. The industry's ability to innovate and adapt to emerging trends such as digitalization, circular economy, and green chemistry will be critical. Embracing sustainable practices, fostering collaboration across sectors, and investing in research and development will drive our collective progress. In conclusion, the chemical sector holds an immense importance for India and the global economy. As leaders in this chemistry, we have a responsibility to harness its potential for sustainable growth, innovation, and social development. By leveraging the power of partnerships and advocating for supportive policies, will drive responsible business practices. We can pave the way for a prosperous future that benefits not only our industries, but also society at large. This B20 Surat meet will aim to deliver concrete, actionable policy recommendations on priorities by each rotating presidency to spur economic growth and development. I wish you all the best and hope all of you have a wonderful takeaway from this event. Thank you for your attention, and I look forward to a fruitful discussion and collaboration during this B20 meet. Thank you. Thank you very much, Shri Desai. We move forward. I request Mr. Shreyans Dholakia, the brand custodian at Shri Ramakrishna Exports, to please share his thoughts with us. Thank you.
निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुच्चा सुख दुख संgne gacchant muda padam vyayantat. Namaste and good morning to all dignitaries on the dais, Mr. Minister, foreign delegates and the guests here. You are all welcome to Surat. It is my hometown and I'm very pleased to welcome you all here in Surat and as a part of this B20 event. It's a historical moment for Surat and Surtis like me. Today, what I see is that probably I'm the youngest speaker here on the stage and also the tallest. That's why my mic is not adjusting well. It was 1964 when a boy of 14 years old, helping his family in the farmlands and being educated 10 kilometers daily walking barefoot. He was given a chance, an opportunity to come to Surat and make his living in diamond industry. He worked for 6 years, learned diamond industry and built his own company and started his company after 6 years of learning. In the journey, he achieved many milestones, but one of the biggest milestones that he is proud of is uniting the whole family in Surat. He has faced many life-threatening accidents in the journey. And today, this boy is none other than my father, Govind Dholakia. He came to Surat, thank you. So when he, today what we see him as that he has helped as many people came to him in his journey of last 30 years. Probably every single day in last 30 years, he would have met people to relieve them from their pain. And to give it a number, more than 200,000 people have been given relief by him, physically meeting everyone. He is very proud today that he has created a family of 30,000 fellow members in the family, where 7,500 people are working with us. Joined in our group and in various fields, and that's their extended family I'm talking about. And that's also matching to our G20 theme, which is Vasudhaiva Kutumbakam. We surely believe in it. And while he was building and helping society, that is his nature, there was somebody building our group and our business as well, and that was Lord Vishnu. With his help, today our group revenue has touched $2 billion, US dollars. So that is my father for you. And how he could able to do all this? Any guesses? And that's because of Surat, the Surat that we are in today. Surat is a city which welcomes everyone with open heart. The people of Surat are so generous, they are welcoming, and in last few centuries, they would have given accommodation to thousands of migrants that have come to Surat and helped build Surat, given an equal opportunity for migrants like my father to grow, prosper, and build their businesses and flourish out of Surat. This is the story where, nothing to everything comes true, and Surat is that place. Historically, if we look at Surat, is a very generous city. People here are very generous and philanthropic. If you look at a mythological story of Mahabharata, Karna's story is that it was the biggest donor of the lifetime that we have seen ever. And that's what represents Surat. So there are various industries from Surat, diamonds, textiles, and the industries from Hazira are all part of this philanthropic activities. And in 2014, when we were celebrating my father's 50 years in the diamond business, we as a family wanted to give him something, and that was to bring to true his own dream, which was to have Surat in the global map of knowledge. So with Bhagwan Krishna's blessing, we have already acquired 250 acres of land in Surat, and where we'll be setting up an institute called SRK Knowledge Foundation. And this institute that we're going to set up will be on the basis of ethics and character building. And it will be injected by the philosophies of Bhagavad Gita. Surat is the first LEED certified city,
And being a proud Surti, we also took an oath that we want to make our company net zero by 2024. I would not much mention about this, but once we are done with net zero, probably we would be the first, if not world, we would be the first Indian company to achieve net zero in emission status by 2024. We have all gathered here to acknowledge and embrace the spirit of interconnectedness and recognize that we are all indeed a global citizen. Our company stands the testament to that we are already partnering and with the 80 plus countries across the globe by exporting our diamonds, the product that we do, by value as well, adding value to it. And we have successfully forged these connections with all the countries. And we not just export diamond as a product, but we add essence to it by the philosophy of my father, which is diamonds are God to us. Amongst the segments, of course, luxury segment will continue to be in a very sweet spot. Surat will still contribute to India's global exporting, adding values to the product that it exports. With environment and climate control, protection being a very crucial and core to its existence, for our existence and also for the generations to come. And continuity of human existence, we need this. It will remain recurring decision making for every corporate and every government in every aspect of the decision making. Protection of environment, protection of climate control will be very important. It will be a boardroom discussion. Also, countries like India, where it is highly diversified, it has a talent pool which nowhere else has in the world. India will prove, and we will see that it is leading to the next global growth story in times to come. India is hosting G20 meetings and delegates as a proud Indian. It is our responsibility that we contribute to this leadership thought of our Prime Minister, and we thought, how can we extend our support to B20? And this is also matching to SRK's core values, where ethics and character building is very important in times to come, and G20's overall agenda is also matching to our value systems. And that is the reason we chose to support the B20 meetings all across the India. My sincere gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for taking the G20 leadership, and we are thankful to G20 and B20 committees and CII especially for accepting our proposal and making part of this wonderful history that Surat is seeing today. Together, we are all well poised to take a leap into the future and continue to add value exponentially for achieving India's dream to prevail in the world that is going to come. Thank you very much. Pleasure. Thank you so much for such a positive and motivating address. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we move forward. I'm requesting Dr. Ella Kokotsis, Director of Accountability G7 and G20 Research Groups, to kindly join us. Can we see her on screen? Good morning. Am I visible and audible? Yes, ma'am. Yes, okay. Good morning, everyone, and greetings from Toronto, where it's almost 1:30 in the morning. My sincerest thanks to the B20 and the CII Secretariat for the invitation to speak at today's event alongside this extremely distinguished panel of speakers. It's truly an honor for me to be here, albeit virtually. I hope to one day visit Surat and its people. I promise I will make the trip soon. Now, we've heard already this morning that the objective of the B20 at its meeting in January was to bring forward recommendations to the G20 on the theme of RAISE.
And I'm going to focus specifically on the sustainability component of RAISE, particularly what role does the business community play in moving towards a greener, more sustainable future? And here I'll draw on some specific examples from India because I think they're quite extraordinary. Following that, I'll offer a few recommendations for the B20 to consider bringing forward to the G20 when the leaders meet in September. With India now having surpassed China as the world's most populated nation, energy demand in India is expected to exceed every other country over the next decade. But of course, challenges in the energy sector are acute, not only in India, but globally, spurred by, of course, the ongoing crisis in Ukraine, sharp increases in commodity prices, post-COVID supply chain disruptions, and also inflationary pressures, all of which have made energy less affordable, less reliable, and less accessible. And this is a worldwide phenomenon, not only in India, of course. So given these current global conditions, what actions can really the business community take at this point to transition to a green economy? Now, the green transition will require very significant investments in infrastructure, renewables, and manufacturing. And the business community in this sense is essential in providing the funding for these investments through things like venture capital, private equity, and corporate investments. In fact, the Bank of America recently predicted that investments in India's green energy sector could reach $800 billion over the next decade. $300 billion of this would be allocated towards the infrastructure of the grid and the build out of the grid in India. 250 billion is expected in India's renewable sector, and an additional 250 billion is anticipated in battery technology and battery storage capacity. Now, these are enormous investment opportunities for India. And we know that leading businesses, including Reliance Industries, Adani, and Tata, to name but only a few, have all detailed their green energy investment plans. We also see that energy efficiency measures are being adopted by businesses across India in an effort to reduce their carbon footprint. For example, the Mahindra towers in Mumbai reduced their power consumption by 14% within the first 12 months of their energy retrofit. And according to a recent World Bank report, using these energy efficient technologies has the potential to open up $1.6 trillion worth of investment opportunities in India by 2040. So huge investment opportunities again in the energy saving sector. Businesses are also promoting low carbon transportation solutions by adopting electric vehicles for their fleets and setting up electric vehicle charging infrastructure. And India, we see, is going electric with a goal of reaching 30% of electric vehicle penetration by 2030. And I think this is a really impressive target. The business community is also engaging with financial institutions to access green financing for sustainable energy projects. For example, the Reserve Bank of India now has guidelines for financial institutions to accept green deposits, which ensure that funds are used for green buildings, for energy efficiency projects, and for clean transport. Moreover, the Make in India initiative is very actively promoting domestic manufacturing of renewable equipment, including things like solar panels, wind turbines, and energy storage systems. And this type of initiative not only provides incentives for local businesses across India, but it also reduces India's reliance on imported goods. So we've seen the impact of Indian businesses in driving the green energy transition. But what additional recommendations at this point should the business community, not only in India, but across the G20 communities, provide the G20 leaders in order for them to advance their sustainability and their net zero targets? And here I'll offer a few short suggestions. First, I think the G20 needs to set ambitious and consistent policies that support the transition to a net zero economy. And this means providing both stable and predictable policies that encourage the business community to invest in clean tech. Second, the G20 should also encourage private sector investment
in clean energy by leveraging investment guarantees, green bonds, and also subsidies for renewable energy projects. Third, the G20 should support sustainable finance initiatives by developing robust guidelines for green lending. Fourth, encouraging collaboration with local business communities to support capacity building is key, particularly in developing countries, which need to build resistance to climate change. More often than not, the developing world is most vulnerable to a changing climate. Fifth, the G20 should also explore ways to strengthen and expand carbon markets. Examples from around the world have shown that robust carbon markets can provide market-based incentives for businesses to reduce emissions and to invest in cleaner energy technologies. Sixth, G20 leaders should also encourage businesses to adopt a circular economy by providing incentives to reduce consumption and to minimize waste. Investments in breakthrough innovations should also be encouraged by the G20. And this really means supporting collaboration between businesses, academia, research institutes, and government agencies. It can't be done alone by business. It can't be done alone by government. It really needs a collaborative effort. And finally, the G20 needs to encourage consistent and transparent reporting by adopting robust reporting practices that disclose emissions and mitigation efforts. For example, by using internationally recognized frameworks, such as the Global Reporting Initiative and the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. I think by implementing these types of recommendations, I feel that the G20 can really create an enabling environment for businesses to drive the transition to a net zero economy. And we've seen in India how businesses are embracing sustainable practices. They're transitioning to renewable energy. They're adopting energy efficient technologies. And these actions place India, I think, in an excellent position to not only lead discussions at the G20 later this year, but to also make real progress in terms of actively engaging with the business community to build a more sustainable, low carbon future. And I'll end my comments here. Thank you very much for listening. Thank you very much for joining us from right there. Now I request Mr. Tom Moses, Executive Vice President, to kindly step up and give us his remarks. Thank you. Good morning, and it's great being here. I just arrived from the U.S. an hour or so ago, and so welcome to everybody, distinguished ministers, government officials, and guests. And I decided, since my background is really so much embedded in diamonds and gemstones, you kind of have to see them to appreciate them. So I decided I would show a few slides today. So I'm going to talk about two key things today that I think are impacting the future, and both are opportunities, and there's some challenges. And one of them is man-made or laboratory-grown diamonds, and which it's remarkable how India, in particular Surat, has grown in this business in the last 3 or 4 years. So, and I would say it's created both a new opportunity, but also a challenge. And by a challenge, I mean it's created, in a sense, a competitive product for the natural diamonds that were being produced here. But related to this, there are a few things. The challenges are, again, going back to some of the points Ella made, there's power consumption. But we're already seeing many of the producers of laboratory-grown or man-made diamonds using solar and so on, because it is an intense amount of power that's consumed.
And I'm told now that there are about 6,000 or 7,000 of these reactors that are producing man-made diamonds today. And I'll talk a little bit about those to give you some context. Okay, thank you. So diamond is a remarkable material, and without going into too much detail, and again, I'm usually talking to industry bodies, but I think you'll find some of those properties quite interesting. It's a particularly important subject for material scientists also, and it has many different applications. Of course, you know it is a very hard material, the hardest known natural mineral, and resistance to all kinds of other energies. And in fact, this industry, and I think it will happen in India, is there's a great opportunity for diamond replacing, especially man-made diamond replacing silicon to power supercomputers or quantum computing. And I think with that, with the developments here in India using in the gem industry, I'm sure we'll see that application also. So there's two basic methods in which they're produced, and one is this high pressure, high temperature methodology with extreme heat and pressure. This somewhat simulates what happens in nature. And to give you some idea, when I talk about pressure, it's extreme. This gives you this kind of pressure that's necessary, equivalent to 5 or 6 GPa is approximately similar to 80 elephants stepping on a toe. So that's the kind of pressure that's required. This methodology is mainly used in China. So I mentioned earlier the methodology that's being used, the 6,000 or 7,000 reactors in India. It actually propagates diamond at a much lower temperature and pressure. And just for context, both of these methods that I'm telling you about were introduced or developed within a year of one another in 1954. However, the development was really quite slow, and it wasn't until the last 20 years, and I'll give you just a picture of it. But basically, this is how that, there's a kind of a hydrocarbon gas and propane that are used in creating this plasma cloud and essentially raining down atoms of diamond that grow on these seeds. And what you see in the bottom is what they look like. And on the bottom right is the final product. So equal to and quite pure as the most pure natural diamonds. So I talked about those two methods, and you can see the transition, and this is much to the result of what's taken place in India, and in particular in Surat. The CVD reactor, the second one I just told you about, CVD grown, is now dominating the production in the world. So this gives you also some idea. I talked about the last 20 years, remarkable, the development, and it's amazing what's taken place here in India using this methodology from roughly almost exactly 20 years ago. On the far left, you can see the type of product that was being produced and the size, and now this is what's happening today. Very recently, the 30, 34, and 50 carat polished diamonds. So it goes to show both the progress that's happened and also the opportunity this has created as another export product for Surat. So I'm going to shift very quickly because I think this is another key theme that's happening in our industry, not directly happening here, but it's the interest in determining the origin, where diamonds come from. And of course, a lot of the rough product ends up in India to be manufactured. Very few diamonds are actually recovered today in India. So
So there's a demand for a way to independently to determine diamond origin, and some of it's related to geopolitical issues. Some of it has been just consumers, the new consumer today who wants to know where products come from. So there's a concern, there's a lot of, because there is a desire for this, I think there's a lot of people making claims that probably are not unsubstantiated today. And I think as an industry, we have to be careful to make sure that the facts are correct that are going to consumers. So many of the experts in the room who deal in diamonds would say, look, I can just tell by looking at them where they likely came from. And I think in some cases that's true. The yellow diamonds there look very much like a classic from Australia, from the Ellendale mine, and the blue ones that are on the bottom there are typical of diamonds that come from a mine in South Africa. And then the ones on the right, if one saw that lot or cluster of melange of diamonds, they would likely say that these came from Australia. But the challenge is, of course, determining the stones when one sees them individually. So this is just gives you an idea of the sources of diamonds that would have to be tracked, and the challenge is, of course, to building a database to have all these samples and use analytical techniques to determine them. So work has been done on that. This kind of gives you this is typically what happens when diamonds form in the mantle, and they are, I would say, really use the term because it happens so quickly, ejected through volcanic action to the near surface where they are ultimately recovered. But the little stars you see in there gives you, there isn't one particular type of diamond that comes from one mine. They're commingled with different varieties of diamond, and often occur in a single mine. And the interesting thing is, from mine to mine, they are quite close with overlapping physical and chemical features of diamonds from different deposits. So there's been, in the industry, and of course still, there are a lot of colored stones, also other minerals that are, Jaipur is well known for, the manufacturing and processing them here. It's world renowned for that. So people often say, well, you can determine the country of origin by doing chemical analysis and many other things with other minerals. Why not diamond? Well, they really form entirely different places. As I said, the diamonds are deep within the mantle of the earth, and the other minerals are really formed near surface and have a lot of different impurities that allow one to make analysis and signature. So and this is a lot of work that we do at GIA, we look at the analysis and look for impurities and can measure those very accurately down to a few parts per million. Now, diamond is one of the purest minerals, basically all carbon, more than 99.8% of carbon. So it's much more difficult to find this signature. And in fact, it's really, we have to look at parts per trillion. Almost a very difficult thing to measure. But for context, my colleague actually created these slides. So if you think of parts per million, think of a pail of water, and one, that would be one drop, would be parts per million. And we're talking about parts per billion. Again, envision a above ground swimming pool. One drop would represent 1 per billion. And then on the parts per trillion, we're talking about 20 Olympic-sized swimming pools. So that's how pure diamond is. Now, those measurements have actually been made. It's a very time-sensitive and somewhat destructive method. But the interesting part is, even from different mines in different parts of the world, those measurements have been very similar. So the likelihood of using this methodology to be able to determine the origin of diamond is not likely in the near future that we can see. So there are a few different ways that
GIA and many others are using. And I say this because it's become such an important part, and those here from the G7 know that's been a particularly important topic that's been discussed, and many sanctions have been issued and likely more to come. So I think the industry has been responsible, taking different methods. Mainly those are tracking the diamonds through the process, and certainly GIA has been part of that. So just a few conclusion remarks, talking about the origin, and I somewhat talked about them, is retaining the origin information is really the simplest and the most robust approach today. And refining the way we measure trace elements will take many diamonds of known origin and building a very large database. That is something GIA is undertaking, and we sometimes describe it as a moonshot. And we believe our organization is a unique position to investigate that with the scientific prowess and the ability to collect the samples. My final comments, and these are really my opinions I think, for the future as we have further discussions throughout the day. I already talked about it. Source information of the diamonds that are sold will be important, especially to new generation. So the transparency through the supply chain is more and more an interest that we are hearing in the marketplace, I think not just in the US, but surprisingly in China, here, and other locations. And laboratory-grown diamonds, which again, a significant investment in production has been made in India, will likely have a parallel path with natural diamond and overlap less in the future. And again, these are my opinions that I think will be a very successful product, but I think take on different paths, just as other man-made gem materials like ruby or sapphire have. That last point, let's see if I can pull that back up. Let's see. And I think this is an important one. The supply of natural diamonds will decrease. And again, I think it's a point that Ella made in her remarks, is that highlighting the circular economy, because all of these diamonds that have been mined obviously still exist. And in mature markets like America and Japan, we're starting to see recycled diamonds come to the market, which will perhaps be necessary to meet the demand. And lastly, I think the storytelling of the unique way diamonds are formed, the process in which they're manufactured, mainly here in Surat, will become more and more important to the consumer. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Moses. Ladies and gentlemen, we have somebody who I'm going to introduce to you, and although he doesn't need any introduction, entered the world of politics as a social worker, and at a very young age of 15, he won the elections by a record-breaking margin, the highest in the Gujarat Assembly, becoming the youngest MLA at 27 years. Ladies and gentlemen, we have Mr. Harsh Sanghvi with us. As we all know, Honorable Minister of State, Home, Industries, Transport, Youth, Sports, Government of India. And I happened to meet him some time back, and I can tell you that he's the most accessible person, simple at heart, always willing to help anyone who approaches him. Can I welcome you and call upon you to be here to share your remarks with us? Thank you. Good morning. On behalf of Gujarat State Government, I welcome you all to the land of opportunities, Gujarat State. आज मैं मेरी बात यहाँ पे कुल मिला के पिछले कई सालों से हम सब ने मिलके गुजरात को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में किस प्रकार से मेहनत करके
एक अच्छे रिजल्ट के तौर पे हम लोग ने प्रस्तुत कर पाए हैं, वो विषय को आप सबके सामने रखने का मैं प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि बहुत ही कम टाइम में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है और आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करने जा रहे हैं, वो विषय को आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूँगा। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ पधारे हुए सभी डेलीगेट्स को मैं फिर से एक बार वंदन करके आप सबका स्वागत करता हूँ सूरत की धरती पे। हम सब जानते हैं कि G20 जो ये साल भारत उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। G20 19 देशों का 60% दुनिया की पॉपुलेशन का 75% ट्रेड और 85% जीडीपी जो कंट्रीज़ के हाथ में है, वो सभी कंट्रीज़ को ये साल का प्रतिनिधित्व हम जब वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ हमने इसका प्रतिनिधित्व जब कर रहे, तब सबसे पहले मैं ये स्टेट के सभी व्यापारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि गुजरात इसमें से मुख्यत्व कई अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे डेलीगेशंस को कंडक्ट कर रहा है। G20 के साथ साथ ये साल भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद हमें G20 का प्रतिनिधित्व करने मिला है और ऐसी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका हम प्रतिनिधित्व ये साल भारत कर रहा है। खास तौर पे इंडिया की जीडीपी में गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 8.4% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी हम लोग ने कहीं ना कहीं गुजरात ने सक्सेसफुली हम लोग ने 8.4% जीडीपी गुजरात के द्वारा की गई है। 35% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हम लोग का शेयर है। एफडीआई 55 बिलियन 2020 से 2022 तक एफडीआई गुजरात में 55 बिलियन 55 बिलियन हम लोग ने सक्सेसफुली इन्वेस्ट करवाने में गुजरात गवर्नमेंट सफल रही है। हम सब जानते हैं कि 18% ऑफ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो वो 18% आउटपुट गुजरात की ओर से कहीं ना कहीं आप सबके योगदान से ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हमारी जनसंख्या और जोग्राफिकल अगर एरिया देखोगे तो ये बहुत कम है। जनसंख्या के तौर पे भारत में हम लोग 5% है और जोग्राफिकल एरिया हमारा 6% है, लेकिन हम लोग का कहीं ना कहीं शेयरिंग जीडीपी में बहुत ही अच्छा है और हम लोग का वो बढ़ते जा रहा है। हम लोग ये सभी चीज़ आने वाले टाइम में इसको कैसे बढ़ा पाए, आप सबको अच्छी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यूज़ कैसे बढ़ा पाए, उसके लिए कई अच्छे प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और गुजरात गवर्नमेंट की ओर से आप सबके लिए जो तैयार है, उसमें से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मैं मान रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये पूरा कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा फोकस चेंज कर सकता है, उसका पूरा फ्यूचर चेंज कर सकता है, जो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जल्दी वो प्रोजेक्ट पूर्ण होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग गिफ्ट सिटी से बहुत ही अच्छी तरह से माहितगार होंगे। गिफ्ट सिटी कुछ सालों पहले जब प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये सपना देखा था, तब लोग कहीं ना कहीं इसे सपना मान रहे थे, लेकिन सपने को सही तौर पे ज़मीन पे साकार हुआ और आज दुनिया की कई फाइनेंशियल सेक्टर्स और देश के कई ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जो गिफ्ट सिटी के अंदर एस्टेब्लिश हुए और आने वाले टाइम में गिफ्ट सिटी के अंदर और भी हम लोग कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ और अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड हो पाए, उसके लिए काम चल रहा है। धोलेरा सर आप सभी लोगों ने देखा होगा और मेरे कई यहाँ पे सूरत के मित्र बैठे हुए, मैंने कई बार उन्हें कहा है और जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी मैं ख़ास तौर से विनती करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर से धोलेरा विज़िट ज़रूर से आप लोग को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धोलेरा आने वाले समय में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट धोलेरा बन सकता है और वो बहुत ही अच्छी तरह से उसका काम आगे बढ़ रहा है। आप सब लोग सूरत में आए हो, आज ड्रीम सिटी की आप लोग विजिट करने वाले हो। ड्रीम सिटी शायद ही दुनिया में इस प्रकार का एग्जाम्पल होगा।
ड्रीम सिटी, आप जो आज बिल्डिंग देख रहे हो, वो ड्रीम सिटी कैसे बना, उसका विचार कैसे आया। वो विचार आने के बाद दुनिया में कभी 5500 लोगों ने प्रॉपर्टी पहले खरीदी, 5500 लोगों का एक टीम बना, उसमें से वो एसोसिएशन के द्वारा जगह सरकार से खरीदी गई, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बिल्डिंग बनता है, जो आज के टाइम में डायमंड का ट्रेड आने वाले 5 साल के अंदर जो फोकस है वो सूरत बन सकता है। और ड्रीम सिटी में सूरत डायमंड बुर्ज जो बना है, आज जब आप लोग विजिट करोगे, वो बिल्डिंग अच्छी दिखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन वो बिल्डिंग के पीछे दुनिया में कभी, मैं ये मान रहा हूं कि 5500 लोग एक साथ होके कभी बिल्डिंग बनाई होगी, तो ये पहला प्रोजेक्ट होगा। और वो पहला प्रोजेक्ट सक्सेस करने में सूरत के सभी डायमंड के व्यापारी, गोविंद भाई भी यहाँ बैठे हुए अभी हमारे, ये सब सपना दृष्टा है और उन्होंने ये स्वप्न कई तौर पे सफल किया है और सूरत को एक नई पहचान दी है। हाई स्पीड रेल के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये प्रोजेक्ट गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट है। अब तो महाराष्ट्र में भी बहुत ही अच्छी तरह से वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मांडल बेचरा जी सर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में गुजरात को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है और इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ और छोटे छोटे कई इंडस्ट्रीज़ आ रही है और उसके कारण नॉर्थ गुजरात सेक्टर में बहुत ही बड़े पैमाने में कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट हुई है। ग्रीनफील्ड पोर्ट्स के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, गुजरात एक लीडिंग स्टेट है ग्रीनफील्ड पोर्ट्स में। रिन्यूएबल एनर्जी में भी गुजरात आज बहुत ही अच्छा कर रहा है, कच्छ के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले टाइम में बहुत बड़े आ रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले समय में हम लोग और अच्छी तरह से कैसे कर पाए, उसके लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स उस पर काम कर रही है। धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कुल मिला के 920 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसमें 422 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उसमें से 110 स्क्वायर किलोमीटर वो इंडस्ट्रियल एरिया है। धोलेरा हमारा सबसे मेजर फोकस स्टेट गवर्नमेंट का अभी धोलेरा है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग ने खास तौर पे जो फिनटेक और जो इंटरनेशनल कंपनीज जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, खास तौर पे हमने प्रयास किया है कि वहाँ पे उनकी और जो फैसिलिटीज़ है जैसे रेसिडेंशियल्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, आसपास के 100-150 किलोमीटर्स में वन डे पिकनिक कैसे हो पाए, किस प्रकार से अच्छे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे आ पाए। हम लोग ने ओवरऑल धोलेरा में कहीं ना कहीं हम लोग का फोकस है और रेगुलर हमारे इंडस्ट्रीज़ के ACS भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो हम B20 में यहाँ पधारे हुए लोग, आज का धोलेरा देखोगे तो शायद 10 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट की बात हुई थी तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि धोलेरा ऐसा बन सकता है। इंडिया के अंदर कहीं पे भी इस प्रकार के रोड्स आपको नहीं दिखेंगे। धोलेरा के एयरपोर्ट का भी काम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। धोलेरा और भी कई तरीक़ों से हम लोग कनेक्टिविटी उसकी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण धोलेरा में इंडस्ट्रीज़ जल्दी से आ पाए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अभी एक US विज़िट जो हुआ था, वो US विज़िट ने गुजरात को किस प्रकार से पूरे देश को, उसमें से खास तौर पे गुजरात की गिफ्ट सिटी की बात करें या सानंद की बात करें, ये दोनों एरियाज़ में एक आप कह सकते हो कि आइकनिक प्रोजेक्ट्स कैसे आ पाए, उसके लिए ये विज़िट उनकी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही और हमारे लिए कहीं ना कहीं ये गिफ्ट साबित हुई प्रधानमंत्री जी की US विज़िट। गूगल UPI और आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ से दुनिया तक पहुँचने के लिए जो रिसर्च और उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जब गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, यहाँ बैठे हुए सभी बिजनेसमैन के लिए कहीं ना कहीं एक नई दिशा है। गूगल का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना और वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मात्र इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो लोग रिसर्च के लिए गिफ्ट सिटी को हब बनाने वाले हैं, जो जिसमें खास तौर पे हमारी लोकल लैंग्वेजेस को भी वो लोग प्राधान्य देने वाले हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी प्रोजेक्ट ऑफ माइक्रोन जो सानंद में आने वाला है, कभी आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई गवर्नमेंट इतने कम टाइम में
लैंड प्रोवाइड करें, उनके सभी जितनी भी मांग थी, सेमीकंडक्टर को इंडिया में लाने के लिए जो कोई व्यवस्थाओं की जरूरत थी, वो मात्र 5 महीने में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर परिपूर्ण की। और प्रधानमंत्री जी की यूएस विजिट में 1990 से भारत जो सपना देख रहा है, कई प्रधानमंत्रियों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन हमें 2023 में उसकी सफलता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं एक युवा देशवासी के तौर से अभिनंदन और आभार मानता हूं। मेरे देश के लाखों करोड़ों लोगों का सपना जो सालों साल से चलता आ रहा है, उसकी मेहनत भी हुई, लेकिन वो मेहनत को सही तौर पे जमीन पे उतारने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने, और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम ने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। जब मैं ये एमओयू में अभी कुछ दिन पहले 29 तारीख को ये एमओयू हुआ, तब उनकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कहा गया कि आज तक दुनिया की कई देशों में माइक्रोन द्वारा इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट हुए हैं जहां पे उनका एस्टैब्लिशमेंट है। कोई भी देश ने कम से कम 3 से 5 साल लगाए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 5 महीने में ये पूरी प्रोसेस खत्म कर ली। शायद जो लोग इससे जुड़े हुए नहीं है उनको शायद ये चीज एकदम फैक्ट या रियलाइज नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रात दिन होके, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसके कारण आज ये चीज़ अचीव हो पाई है। उसके कारण आने वाले दिनों में हजारों लोगों को नई रोजगारी सानंद में मिलेगी। मेरा ये मानना है कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं, सूरत में बैठे हैं, तो खास तौर पे हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो पीएम मित्रा पार्क। देश में सबसे ज़्यादा रोजगारी टेक्सटाइल्स देती है और हमारी जो पीएम मित्रा पार्क का जो प्रोजेक्ट है, देश में ये प्रोजेक्ट बहुत ही कम जगहों पे पास हुए हैं। कुल मिला के 7 जगहों पे ये पार्क्स पास हुए हैं, जिसमें से एक पार्क सूरत के पास में नवसारी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, जो पार्क आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए लोगों की पूरा विजन जो है वो विजन को परिपूर्ण कर पाएगा। बांग्लादेश है, आसपास के कई कंट्रीज के सामने आज जो हमें दिक्कतें हैं, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ। कल ही मैं कुलीन भाई के साथ और उन लोग के साथ बैठा था, टेक्सटाइल्स पॉलिसीज़ के लिए जो सजेशंस थे, गारमेंट पॉलिसीज़ जो हम लोग नई बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में, उसके लिए उन्होंने जो सजेशंस दिए सीआईआई ने, उसको हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं और आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है। पीएम मित्रा पार्क वो मात्र टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों का फ्यूचर नहीं बदलेगा, मेरे शहर के हजारों युवाओं का फ्यूचर बदलेगा। इससे सूरत और आसपास से जुड़े हुए कई जिलों को बहुत ही बड़े पैमाने में रोजगारी मिलने वाली है। आज आप यहाँ जहाँ बैठे हो, ये मैरियट होटल से पीएम मित्रा पार्क हार्डली 25 मिनट लगेगी, क्योंकि पीएम मित्रा पार्क तो ला रहे हैं, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? उसकी कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट से आप उतरोगे तो पीएम मित्रा पार्क में पहुंचने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके लिए सूरत डायमंड बुर्ज के पास से एक ब्रिज जो बनेगा, जो उभराट उतरेगा, उसके बाद आपको एकदम इजीली पीएम मित्रा पार्क पहुंच पाओगे। और पीएम मित्रा पार्क सूरत का सबसे बेस्ट लोकेशन इसके लिए साबित हो सकता है क्योंकि वो ब्रिज की कनेक्टिविटी के साथ पीएम मित्रा पार्क से पोर्ट पहुंचने तक मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप लोग का बहुत ही कम हो सकता है। वो भी हमारा मेजर फोकस है और आने वाले दिनों में मैं यहाँ टेक्सटाइल से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं खास तौर पे आपको मैं विनती भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप पीएम मित्रा पार्क सूरत वाला जो प्रोजेक्ट है, नवसारी वाला, उसमें खास तौर पे आप सभी लोग इंटरेस्ट रख के उसका स्टडी करके आप लोग सही तौर पे उससे जुड़ने का प्रयास करिए। उसका एमओयू ये 13 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होने जा रहा है और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही फास्ट गति से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग भूपेंद्र भाई पटेल हमारे मुख्यमंत्री जी का खास तौर पे आग्रह है और हम लोग उसको एक नए प्रोजेक्ट को आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस करने वाले। पुरानी जो जीआईडीसीज है उसको भी स्मार्ट बनाने का हम लोग ने कंसल्टेंसी फर्म्स के द्वारा हम लोग ने अलग अलग प्रेजेंटेशंस को हम लोग देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप सबके
आइडियाज़ के साथ हम लोग प्रयास करेंगे। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क्स जो इंटरनेशनल तौर पे जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलती है, आप लोगों को कम से कम परमिशंस लेने जाना पड़े, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली आगे सोच रही है। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि GIDCs में आप लोग को एकदम ही ईजीली आप लोग कोई भी प्रकार के इंस्टॉलमेंट्स, आपका कोई भी प्रकार की कंपनीज आप लोग चालू कर पाओ, उसके लिए हम लोग, हमारा मेजर फोकस आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये रहेगा। लैब ग्रोन डायमंड्स, जब सूरत में बैठे हैं तो ऑफ कोर्स टेक्सटाइल और लैब ग्रोन डायमंड्स की बात आएगी, लेकिन साथ में अब लैब ग्रोन भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा फोकस है। ये फोकस इसके लिए है, ये आंकड़े आप देख सकते हो, 2017 में US मिलियन 216 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, उसके सामने 2022-23 में 1680 करोड़ मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। सूरत की पूरी इकोनॉमी आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसमें लैब ग्रोन डायमंड का रहा है। लैब ग्रोन डायमंड और नॉर्मल डायमंड्स में कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे आजकल जब देश और दुनिया एनवायरनमेंट के तौर पे जब आगे बढ़ रही है, तब एनवायरनमेंट फ्रेंडली डायमंड को लैब ग्रोन डायमंड कहा जाता है। और लैब ग्रोन डायमंड और नॉर्मल जो रियल डायमंड्स है, उसके बीच का सबसे बड़ा हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा है? हमारे देश के लिए लैब ग्रोन डायमंड इतना इम्पोर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हम जो रियल डायमंड्स है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद कुछ परसेंट हमारी उस पर कहीं ना कहीं जॉब वर्क लगती है और कुछ बहुत कम परसेंट हमारा मुनाफा होता है। उसके सामने लैब ग्रोन डायमंड्स जब ग्रो भी इंडिया में होता है, जॉब वर्क भी इंडिया में होता है, और जब एक्सपोर्ट होता है तो उसका पूरी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इंडिया को बचती है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए लैब ग्रोन डायमंड सबसे इम्पोर्टेंट है। और लैब ग्रोन डायमंड को खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूँ। मेरे सूरत शहर के लाखों कारीगरों की ओर से उनका आभार मानता हूँ। मेरे सूरत शहर के हज़ारों व्यापारियों की तौर से उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट किया। और उनका प्रमोशन इतना हैवी है कि पिछले 10 दिनों से जब प्रधानमंत्री जी ने जिल बाइडेन को जब ये एक 7.5 कैरेट का सूरत मेड डायमंड जब गिफ्ट दिया, उसके कारण सूरत की इकोनॉमी में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा इसमें भी जंप हमें देखने मिल सकता है। लैब ग्रोन डायमंड एक नॉर्मल बेबी और IVF बेबी में जितना फ़र्क है, उतना ही फ़र्क रियल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स में है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आने वाले समय में जब आपको समय मिले, आप ज़रूर से लैब ग्रोन डायमंड के एक यूनिट में विजिट जरूर से करना। सूरत की डायमंड का जो फ्यूचर है वो सही तौर पे लैब ग्रोन डायमंड और रियल डायमंड्स दोनों का बहुत ही इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें मुनाफा ज़्यादा होने के कारण मेरे शहर के लाखों वर्कर्स को इसमें कहीं ना कहीं रोजगारी भी ज़्यादा अच्छी मिल रही है और उनका कहीं ना कहीं उनकी इनकम भी इससे ज़्यादा हो रही है। इसके लिए लैब ग्रोन डायमंड्स पे गवर्नमेंट का फोकस जरूर से होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे हम सभी लोगों का इस पे बहुत ही अच्छा फोकस है और आने वाले दिनों में लैब ग्रोन डायमंड्स को भी हम लोग प्रमोट करने में जो कोई अच्छी मदद हो सकती है उसमें हम लोग का फोकस है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर एक सेक्टर के लिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग हर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच, स्किल्ड वर्कफोर्स गुजरात के पास बहुत ही अच्छा है। सस्टेनेबिलिटी पे हमारा फोकस है। ईज़ ऑफ लिविंग हमारा सबसे बड़ा फोकस है और उससे भी बड़ा हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं। मैं गुजरात की पुलिस की टीम को सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के माध्यम से आपका आभार मानता हूँ। हज़ारों पुलिस फोर्स ने और गुजरात के सभी लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे सेफ पैसेज गुजरात को बनाया है। सालों साल से किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में घटनाएं ना हो, किसी भी प्रकार के ब्लैकमेलिंग ना हो, उसके लिए हमारा मैक्सिमम प्रयास रहा है। और आप सबके सेफ्टी के साथ साथ आप सबके फ्यूचरिस्टिक आपने जो प्लान बनाया है वो सही तौर पे सक्सेस हो, उसके लिए सेफेस्ट पैसेज अगर देश में कोई स्टेट में हो तो वो गुजरात है। उसके लिए सबसे अगर ज़्यादा श्रेय किसी को जा रहा है तो वो गुजरात के नागरिक और गुजरात के पुलिस को जा रहा है। अब ये सब चीज़ें जब करनी है तो हमारे लिए ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात
4.45 गीगावाट पावर जनरेशन कर रहा है, जब गैस और वाटर ग्रिड जो है हमारी वो 2700 किलोमीटर तक ऑपरेशनल है और उसको और भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नर्मदा कैनल हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज तक पहुंची है और इंडस्ट्रीज तक नर्मदा कैनल के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के किसानों का, आप जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे बैठी है तो गुजरात के किसानों की नर्मदा कैनल के पहले और आज उनकी इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस आया है, वो भी सही तौर पे एक बहुत ही बड़ा रिसर्च का विषय है। आप सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ भी जुड़े हुए कई लोग बैठे हैं, उन्हें ज़रूर से ये रिसर्च करना चाहिए कि एक नर्मदा कैनल के सपने ने उसको ज़मीन पे जब उतरी तो गुजरात के लाखों किसानों का जीवन कैसे बदला है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड पार्क, आप सभी लोग जानते हो कि और भी कई पार्क्स और ख़ास तौर पे पीएम मित्रा पार्क, बल्क ड्रग पार्क और भी पार्क्स का हमारा फोकस है, जिसके माध्यम से वेरियस इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स गुजरात के हर एक सेक्टर्स में बना हुआ है। रोड कनेक्टिविटी गुजरात की बेस्ट है। पोर्ट कनेक्टिविटी गुजरात की मेरे ख्याल से एक मेजर पोर्ट और 48 दूसरे पोर्ट्स गुजरात में है, जिसके कारण से इंडस्ट्रीज़ को कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे। और पोर्ट हमारा सबसे बड़ा फोकस है। आने वाले दिनों में भी हम लोग पोर्ट को इसी स्पीड से और भी उसमें डेवलपमेंट आगे करने जा रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात में और भी जगहों पे, कई जगहों पे रेल कनेक्टिविटी के नए नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ हाई स्पीड रेल मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बन रही है, जिसके माध्यम से मुंबई के मेरे जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो सूरत डायमंड बुर्स में भी भविष्य में आने वाले हैं, और भी कोई इंडस्ट्रीज अगर आप गुजरात में लगाओगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बॉम्बे सेंट्रल से दहिसर पहुँचने में जितना समय आप लोगों को ट्रैफिक में लगेगा, उससे कम टाइम में ये हाई स्पीड रेल से आप लोग हमारे गुजरात तक पहुंच पाओगे। और सब चीज़ों की व्यवस्था हम लोग करने के लिए तैयार है। और ये ट्रांसपोर्टेशन मोदी जी ने जो नया जो विकसित हो रहा है, उसके माध्यम से आप सभी लोगों को बॉम्बे से अंधेरी जाओ या बॉम्बे से सूरत पहुंचो, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। उस प्रकार की व्यवस्था आने वाले दिनों में हो रही है। एयर कनेक्टिविटी गुजरात की बहुत ही अच्छी है। हम लोग उसमें और ज़्यादा फ्लाइट्स कैसे बढ़ पाए, उसका हमारा प्रयास है। कुल मिला के 19 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स हैं। आजकल एयरपोर्ट्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सूरत एकमात्र ऐसा शहर होगा, इसमें भी सूरत की एक खासियत है, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं होगा जिसने फिक्स डिपॉजिट को एयरलाइंस को दी, और पहली एयरलाइन एयर इंडिया थी जिसको हमने फिक्स डिपॉजिट देके सूरत से दिल्ली की फ्लाइट चालू करवाई थी। हम लोग ने ये गारंटी दी थी कि अगर लॉस हो तो ये एफडी में से काट लेना है और आप हमारे वहाँ से चालू करो। उसमें भी सूरत के सभी व्यापारियों का और हमारे सांसद श्री CR पाटिल जी का आभार मानना पड़ेगा, जिन्होंने खुद ये एफडी रखी और सूरत को एयर कनेक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मोदी सरकार आई, उसके बाद एक के बाद एक एयरलाइंस चालू हुई, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी बढ़ी। जरूर अभी कहीं ना कहीं स्पाइस जेट और गो एयर के वजह से हम लोग ने कनेक्टिविटी में कमी आई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कनेक्टिविटी भी हम जल्द से वापस आगे बढ़ा पाएंगे और फैसिलिटीज़ को और जल्द से हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। और सभी पॉलिसीज़ जो खास तौर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टर फैसिलिटेशन पोर्टल जो है वो मैं जानता हूं कि उसमें कई प्रॉब्लम्स है और आप लोग कई इश्यूज को फेस कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये सिंगल विंडो जो है वो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार सही तौर पे सिंगल विंडो बना के आपको देगी। सिंगल विंडो का जो मतलब है वो सही तौर पे हम लोग ज़मीन पे उतारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम लोग उसमें सफलता जरूर से हम सब साथ में मिलकर उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। डिजिटलाइज्ड लैंड बैंक, MSME एक्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, जिसके माध्यम से प्लान पास के जो इश्यूज़ हैं वो सेल्फ सर्टिफिकेशन से सही तौर पे, ऐसे सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन भी जाना पड़ता है और फिजिकल पेपर्स लेके भी जाना पड़ता है, उसमें से हम लोग आपको बाहर जरूर से निकालेंगे। आज हम ये दिशा में आगे जरूर से बढ़े। जरूर नहीं है कि हर विषय में हमें सफलता प्राप्त हुई, लेकिन हमारी नीति क्लियर है कि आप सबको फैसिलिटीज़ देनी है और वो फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। कई पॉलिसीज़ ऐसी है जिसके माध्यम से हम लोग को इन्वेस्टमेंट, ये जो FDI लाने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हुई है।
देश में एकमात्र राज्य गुजरात ऐसा है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है, और उसके कारण हम लोग सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट गुजरात में ला पाए। और भी कई स्टेट्स और कई देश मेहनत कर रहे थे, लेकिन सेमीकंडक्टर पॉलिसी गुजरात की बेस्ट होने के कारण हम लोग सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट गुजरात में ला पाए। आईटी की पॉलिसीज में और भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी। गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी में हमने खास तौर पे एक प्रयास किया। यहाँ टेक्सटाइल से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं एक मेरी विनती है कि हमारा एक मेजर फोकस स्पोर्ट्स वेयर और स्पोर्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स है, स्पोर्ट्स वेयर्स है, टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं इसमें भी ध्यान देना चाहिए। इसके बहुत ही बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट्स के बहुत अच्छे स्कोप है। हम ये पॉलिसी को और भी अच्छी बनाने के लिए सजेशंस आपके आवकार्य हैं, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जितनी भी पॉलिसीज आपको दिखाई है उसमें भी अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर से हमें सजेशंस दे सकते हो, और हम लोग हमेशा सभी के सजेशंस को सभी के सजेशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको पॉजिटिव देखने के लिए तैयार है। सब मिला के, कुल मिला के आप सभी के प्रयास से और गुजरात स्टेट आप सभी के लिए हमेशा एक सेफ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। आप सब, आपकी जो मेहनत है उसमें 100% सफलता मिले, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एज एन गार्डियन और एज एन आपका सपोर्टर हम लोग पूर्ण तैयार है। आप खाली आगे बढ़ते जाइए। B20 आज सूरत में जो आयोजित हुआ है उसके लिए मैं खास तौर पे CII का आभार मानता हूं कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको कंडक्ट किया है। हज़ारों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि प्लानिंग एक 300-400 लोगों का था। इसके लिए ज़्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पे आज नहीं ला पाए, लेकिन आने वाले समय में हम B20 को और बड़े फॉर्मेट में गुजरात स्टेट इंडस्ट्रीज़ और दूसरे एसोसिएशंस के साथ मिलके देश के सभी लोगों को, इंटरनेशनल सभी सेक्टर्स को गुजरात में लाने का प्रयास करेंगे। हम एज एन स्टेट गवर्नमेंट वी आर ऑलवेज विथ यू। आई एम रियली थैंकफुल टू गिव मी अ चांस, और आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत हो तो स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। इतनी विस्तृत और अच्छी जानकारी के लिए, फ्यूचर की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच। I would now like to request Mr. Sonowal, Union Cabinet Minister, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, to kindly step up and address this august audience. Thank you, sir. नमस्कार, नमस्ते सूरत, કેમ છો? બાધુ મજામાં? Respected Sri Harsh Sanghvi ji, Dynamic Minister from the Government of Gujarat, and also he represents the famous city of Surat, I believe. Harshji, sahi hai na? Respected Tom Moses, respected Darshan Shah, respected Kulin Lalbhai, respected Anand Desai, respected Shivans Dholakia, respected Rajesh Kapoor ji, and respected Gubin Dhalokia ji. मुझे जो बताया गया आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी योगदान दी है, और ladies and gentlemen,
and my media friends. I have a small piece of writing, and I believe you will all bear with me. छोटा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ आंकड़ा है जिसको आपकी जानकारी लिए प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है. It is in English, please bear with me. I am always so happy to visit this beautiful state of Gujarat. The people of Gujarat have always showered so much affection with your exceptionally warm hospitality that I yearn to visit this state again and again. Today, it gives me immense pleasure to be here amongst you all in the diamond city of India, Surat. It is befitting that we met in Surat, an important industrial and business hub of the country. वैसे तो सारे गुजरात की हवा में ही व्यापार है ना? The city of Surat, known for its vibrant business environment, serves as an ideal backdrop for this event. Surat's remarkable growth and resilience in the face of challenges is a shining example of India's economic potential and the strength of our political leadership and vision provided by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who was also a 3-term former Chief Minister of Gujarat, spearheaded an economic revolution in the state. I am pleased to address this distinguished gathering of global business leaders, thought leaders, policymakers, trade representatives, and diplomatic delegates gathered today for the CII B20 Surat meeting. December 1st, 2022 was a watershed moment for India. India assumed the G20 presidency and is now, for the first time in our history, hosting G20 Leaders Summit in India in September 2023. For our presidency year, under the dynamic and visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India shows the mantra of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the whole world is one family, as the foundation of our G20 presidency. These themes affirm the Indian way of life of valuing human, animal, plant, and microorganism, and respecting interconnectedness and interdependence. It is also a matter of great pride for us that India's G20 presidency under PM Narendra Modi ji is not going to be limited to aspiration of the biggest 19 economies and the European Union, but will also work for the entire world. India's G20 presidency is the globalization, internationalization of the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. A good example is the recent proposal by India for inclusion of the African Union in this global grouping and creating a G21. The theme of B20 India is raise. Responsible, accelerated, innovative, sustainable, and equitable. Aptly capture the driving pillars of India's economic growth and inclusive development. As the official business dialogue platform of the G20, India's B20 is galvanizing the views and aspirations of the global business community with the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. I congratulate the team at CII for providing excellent secretariat support to this important engagement group. The story of India
is the last decade is the story of India's enterprise, entrepreneurship, and ambition. It's a story of an aspirational India. It is a story of an Atmanirbhar Bharat. In a short period of a decade, India became the fifth largest economy in the world, the third largest market for smartphone, and sixth largest for car, second largest producer of fruits and vegetables, first in dairy production, and the third largest startup ecosystem. India has grown significantly, not just as a consumer market with greater purchasing power, but also as a preferred investment destination. India's story is about infrastructure, both physical and digital. India's capital expenditure as a percentage of GDP was increased from 1.7% in 2014 to nearly 2.9% in 22-23, and further has been increased to 3.3% of GDP in the ongoing financial year. This is over rupees 10 lakhs crore of new transport, energy, water, sanitation, education, and health projects being developed in just a year. This reflects India's commitment towards strengthening our growth fundamentals and augmenting ease of doing business and ease of living for the billion-plus citizen. Under the visionary leadership of Honorable Prime Ministers, propelled by transformative initiatives like National Logistic Policy, PM Gati Shakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity, and other such reforms, the Indian's infrastructure sector has grown manifold. On the digital front, India has transformed from being the back office of the world to becoming a global center of excellence in digital innovation. Made in India innovations such as UPI, DigiLocker, CoIN, Aadhaar, and many such digital public infrastructure platforms have completely transformed citizen access to public services, empowered millions of MSMEs, and created economic growth and employment opportunity for all. Many of these public digital platforms are now increasingly being adopted and piloted in countries across the world. As the Minister of Port, Shipping and Waterways, let me highlight the historic achievement of major ports, shipping and waterways. Major ports under the central government this year witnessed the highest ever cargo handling of 795 million tons, registering an increase of 10.4% growth over last year. During the same year, we recorded highest ever output per day of 17,239 tons, registering a 6% growth over last year. We recorded the best ever operating ratio, 48.54% this year. Highest container throughput was recorded at Jawaharlal Nehru Port Authority. More than 6 million TEUs was handled by JNPA. This progress was possible due to the various digital initiatives launched by this ministry and the increased investment in mechanization, digitization to supply chain. Recently, the move towards the smart ports, such as effective use of NLP, Marine, and Sagar Setu app, are bringing all stakeholders on a single platform, which in turn is helping reduce logistic costs and time and boost efficiency. The government is also committed towards supporting transition towards green growth in India's maritime sector and have set forth time-bound commitment and investment towards the shipment of the same. I feel immense pride in sharing that after delivering India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikram, to Indian Navy, our PSU
Cochin Shipyard Limited has now signed a contract for building 6 next-generation missile vessels for Indian Navy at the cost of rupees 9,305 crores. This marks CSL entry into advanced weapon intense platform. As a part of our green shipping initiative, CSL has signed contract with Norwegian client for 2 container vessels, which will be ultimately powered by hydrogen fuel cell. To further support the positive momentum and accelerate the green transition of shipping, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways is extending up to 30% financial incentive under the rupees 4,000 crores shipbuilding financial assistance scheme for development of vessels running on alternate fuels. We are committed towards rapid decarbonization of port operation in India under the Maritime India Vision 2030 launched by Honorable Prime Minister. In line with this vision, 2 important initiatives that I wanted to share here are the Green Talk program and installation of ship-to-shore electric supply infrastructure. There are profitable non-cargo greenfield investment opportunities available across major ports in India. The Government of India also recently launched the National Hydrogen Mission with the objective of making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world. Towards this mission, green hydrogen or ammonia manufacturing, storage, and bunkering facilities are to be established in all major ports by 2035. Dindal Port, Paradip Port, and VO Sidambaram ports are being developed as hydrogen hub. I invite you all to consider this golden investment opportunity. I believe whoever is interested to invest in this maritime trade, in the shipping and also the port development, they are most welcome, because our Honorable Prime Minister has given this golden opportunity for all of you to play a very important part in this journey. Inland waterways sector is also witnessing transformational changes. The world's longest river cruise, MV Ganga Vilas, successfully completed its voyage of 3,200 kilometers from Banaras to Dibrugarh via Dhaka through the Bangladesh Protocol route. This voyage with 32 international passengers has opened up the vast potential of our waterways to the entire world. I believe this is a very, very exciting news for all of us. Earlier, the people had a tendency to go to west for this kind of cruise. But because of the able and visionary dynamic leadership of Honorable Prime Minister, how India could able to create this particular ecosystem to draw the attention of the global tourists to visit in India. This glorious success of Ganga Vilas should not be limited to just a flash in the pan or a one-time success story. It should be replicated throughout the nation. Today, let me take this opportunity to urge upon you as eminent business leaders to come forward and jointly develop new river cruising experiences in India. We must have Narmada Vilas, Godavari Vilas, Mahanadi Vilas, Kaveri Vilas, and many more river cruises all across our river-rich nation. The cargo transported through inland waterways increased from a mere 16 million metric ton in 2014 to 125 million metric ton in 2023, witnessing a stupendous growth of 681% over the last 9 years. This is the outstanding, remarkable performance rendered by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Because of his vision, because of his practical and scientific and innovative initiative, policy and program, these changes has been witnessed and enjoyed by the people of the country.
And I believe this is definitely, I believe he deserves thousands of thanks on the part of the people of the country. Please clap your hand for our dynamic Honorable Prime Minister's remarkable leadership. I urge upon you as environmentally conscious business leader to take advantage of this extremely economical and eco-friendly mode of inland waterways transportation, which has been revived under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. India today is witnessing transformational growth in cruise tourism sector also. International cruises lines such as Cordelia, Costa, MSC, and many other global cruise liners are making a beeline to do business in India. Economic potential of this industry is expected to be about rupees 35,500 crores by the end of next decade. Indian tourism industry, blessed with such a vast and diverse coastline and waterways, must take advantage of this huge potential and create an indigenous Indian cruise line brand of its own. We are actively promoting cruise tourism for its vast economic impact and have undertaken several investment reforms such as upgradation, modernization of cruise terminal, construction of new cruise terminals, granted berth to cruise ships and concessional rates, volumes discount in cruise tariff up to 20% for domestic cruise ships and e-visa and on-arrival visa facilities for greater convenience, waiver of cabotage for foreign cruise vessels, and various other transformational measures. Our major ports are witnessing double-digit annual growth. And as per the recent World Bank Logistic Performance Index report, please listen to this line. World Bank Logistic Performance Index report, India has moved up from 44th rank in the international shipment category in year 2019 to 22nd rank in 2022. From 42 to 22nd. India spectacularly climbed 16th position among 139 countries from 54th position to 38th position in 2022. In timelines, the country witnessed a 17-place jump in timeline. 17-place jump in ranking from 52 in 2018 to 35 in 2023. Today, our average container dwell time is much better than advanced countries such as USA, Germany. Our turnaround time of 0.9 days is better than Canada, Australia, Germany, and USA. So this is, I believe we being the Indian, हमको भारतीय होने के नाते गर्व महसूस होना चाहिए. ये कोई मामूली बात नहीं है. मैरीटाइम ट्रेड में जिस सेक्टर को पहले कोई देखा ही नहीं था, आज मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने दुनिया में हिंदुस्तान को एक अलग सा पहचान दी है, शक्ति दी है, जिसके वजह से आज देश जाग उठा है और ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है. As we gather here today, it is imperative to acknowledge the potential of our traditional medicine through our Ayush system of medicine in fostering economic growth, job creation, and sustainable development. I, being the Ayush minister, I must create an environment for business opportunity and also what are the scope and opportunity being created in the last 9 years because of the corrective policy and program by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I must narrate it so that you could have better understanding. India, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has taken significant steps to promote and mainstream Ayush practices. We have invested in research and development
infrastructure and capacity building to enhance the quality, safety, and efficacy of Ayush product and services. Both product, as you know, at present in the global market, our presence is more than 4 lakhs crore. 4 lakhs crore in both manufacturing and service sectors. From this, you could just imagine what is the growth, what is the degree of growth that has been taken place in the just 9 years' time because of the reformative measures. This has created a favorable environment of entrepreneurs, investors, businesses to explore the vast potential of Ayush. The cities of Gandhinagar and Jamnagar have witnessed new trend in the promotion and growth in Ayush sector when our Honorable Prime Minister in April 2022 inaugurated the Global Ayush Investment and Innovation Summit, which has seen the letter of intent worth of rupees 9,000 crores. Another milestone achievement is the laying the foundation stone of WHO, Global Center for Traditional Medicine, the only of its kind in the world set up outside the developed countries. Normally, in the developing country में आप सबको मालूम है ऐसा कोई कार्यालय स्थापना नहीं होती. हिंदुस्तान पहला देश है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर में WHO का इतना बड़ा स्वीकृति मिला है. जामनगर में आप लोगों को मालूम है कैसे उनके एक्सटेंशन कार्यालय स्थापना की गई है. तो ये मोदी जी का ही नेतृत्व का गुण है, नेतृत्व का वजह से ये सफलता हमें हासिल हुई है. और हमारे 5000 साल पुराने जो परंपरागत चिकित्सा विज्ञान है, इस विज्ञान को जो मान्यता मिली है, दुनिया में 170 से अधिक देश ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिस करते हैं. इनके बीच में आज हिंदुस्तान ने पहला स्थान दखल की है. यह भी संभव हुए है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए. तो इसलिए हमारी तरफ से 1000 बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहिए. ये हिंदुस्तान का स्वाभिमान का सवाल है, ये हिंदुस्तान का शक्ति का नमूना है. आज दुनिया ने इसको स्वीकार की है. The global trade of Ayush product has seen exponential growth 6 times during last 7 years, from $2.85 billion to $18.1 billion. 2 से 18 ये जो जाम संभव हुई है, ये सिर्फ 9 साल में संभव हुई है. Government has created a separate Ministry of Ayush in 2014, or its budget allocation has risen over 6 times in last 8 years. We are reforming our Ayush education system, amending Drugs, Medical Devices and Cosmetic Act, promoting integrated research for making our system evidence-based. We are strengthening the Ayush wellness infrastructure through National Ayush Mission to tap the great potential of Ayush wellness tourism in India. We are setting up Ayush Park, promoting startup, promoting quality medicine through Ayush Mark, Ayush Premium Mark. Recently, we saw the Honorable Prime Minister's astonishing feat of creating a Guinness World Record where representatives from 135 countries participated in a single yoga event at the UN ground in New York City. So this is the remarkable, I believe, journey which has been remarkably completed by our Honorable Prime Ministers, because this particular journey started in 2014 when he put up his proposal before the General Assembly of UN. And when it was accepted, and it was his proposal that 21st June should be considered as an International Day for Yoga. Yoga for humanity,
yoga for Vasudeva Kutumbakam, yoga for holistic healthcare, yoga for peace and tranquility, yoga for love and affection, yoga for well-being of mankind. So these are the most noble, I believe, endeavor which has been propagated in the last 9 years' time. And out of this remarkable leadership of Honorable Prime Minister, now the global society has embraced yoga, and they have integrated yoga as a way of life. Yoga is a science of mind, science of body, science of soul, science of life. ये शरीर का विज्ञान है, मन की विज्ञान है, आत्माओं के विज्ञान है, जीवन के विज्ञान है. इस विज्ञान का भाषा पहले लोग समझे नहीं थे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ देश का ही नहीं, दुनिया की मानव समाज के कल्याण के लिए, हितों के लिए इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जनरल असेंबली में रखा, जिसके वजह से आज दुनिया के मानव समाज समझने लगे. और निरंतर पिछली 9 साल की कोशिश की वजह से आज आप लोगों ने देखी है कैसे हमारे कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन की मुख्य कार्यालय में 135 देशों का प्रतिनिधि का साथ उन्होंने कमल योगा प्रोटोकॉल का अनुष्ठित की है. और उसी दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड साबित हुई है. पहली बार के लिए यूएन मुख्य कार्यालय में 135 देश का प्रतिनिधि का साथ योग डेमोन्स्ट्रेशन करके दुनिया को नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने किया है, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है. इसलिए हमारे हर भारतीय के लिए गौरव की बात है. हमको शक्ति मिलता है, साहस मिलता है, दोगुना मनोबल मिलता है. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो बिजनेस समिट ये हुई है, ये बिजनेस समिट को भी ऐसे ही हमें आगे बढ़ाना होगा. हमारे परम आदरणीय गुजरात की बड़ी यंग डायनेमिक अभी इंडस्ट्री और होम अलग बहुत सा आपका पास ये है ना, दायित्व है, मुझे बताया गया है. कल्चर भी है, स्पोर्ट्स भी है. तो 27 साल हुई है. मुझे बहुत अच्छा लगा. इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अनुभव हासिल की है, और उनकी भाषण में भी ये प्रकाशित हुई है. आई एम रियली वेरी मच हैप्पी दैट यंग डायनेमिक. और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट. युवा शक्ति महाशक्ति है. अगर युवा शक्ति जाग उठे, मेहनत करे, ईमानदारी से कठोर परिश्रम करे, अपने दायित्व कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाए, तो ये देश कभी पीछे नहीं सट सकता. ये देश हमेशा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनने जाएगा. तो मुझे लगता है कि आज हमें जो भी लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दे रखी है, बाय 2047 when India will complete its 100 years of glorious independence, and when it will celebrate it, by that time India must become self-reliant nation, आत्मनिर्भर भारत. तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं. तो मुझे लगता है कि आज मोदी जी जो भी अपने सोच, अपनी जो भी योजना, ये सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं है, दुनिया के मानव समाज के लिए वो हमेशा अपने कदम उठाते हैं. तो इसके लिए आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है, और दुनिया ने स्वीकार की है. हमें अच्छा लगता है जब बड़े बड़े विकसित देश परम आदरणीय प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से वो अपने श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सम्मान देते हैं, ये हर भारतीय के लिए गौरव का बात होता है कि नहीं? आप बताइए, है या नहीं? अरे जोर से बोलिए ना. ये हमारे लिए कितनी खुशी का बात है. पहले कौन देखता था? आज से 9 साल पहले आप पीछे चला जाइए तो कौन देखता था? आज भारतीय जहां भी है दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, they feel secure because of the strongest leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji.
क्योंकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई की मैदान से कैसे हमारे विद्यार्थियों को सही सुरक्षित अपने घर लाया, माता पिताओं का आशा और उनको कैसे पूरा किया, है ना। इतनी बड़ी उपलब्धि सबको होने लगा है, तो इसलिए हमको लगता है कि कहीं भी हमारे देशवासी कहीं भी आप अपने कर्मों के लिए कहीं भी बसा रहे, लेकिन सब सुरक्षित मानते हैं। इसके लिए क्योंकि मोदी जी है, मोदी जी है तो मुमकिन है। Anyway, I am really thankful to all of you, and we have so many like foreign delegates here. I express my heartfelt greetings to all of you present here, and I am really thankful to CII Gujarat chapter. You have been very nicely organizing this event, and as rightly narrated by our young dynamic minister, then how Gujarat has created the ecosystem for better making Gujarat a better investment destination. On the same principle, now India has become the investment destination for the global players. And I believe that is why Modi ji has brought so much of like flagship scheme, flagship program like PM Gati Shakti, National Logistic Policy, Sagar Mala, Bharat Mala, many more. When he started saying and appealing the people of the country, Digital India, Make in India, Startup, all this, kind of initiative ultimately within the 9 years' time got the better dividend because of the people's participation. सबका साथ सबका विकास, और आज ये एक भारत श्रेष्ठ भारत मोदी जी ने देशवासियों को जोड़ा है, और देशवासियों को जोड़ के अपने देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए देशवासियों का जो भी मनोबल उन्होंने बढ़ाया है, इसके लिए हम हमेशा ये गंभीर उपलब्धि से कह सकता हूं कि हम हमेशा गर्व महसूस करता है, और हमें भी सही दिशा मिलता है, सही शक्ति मिलता है आगे बढ़ने का। इसी शब्दों का साथ आई रियली extend my thankfulness for extending invitation to me, and I hope this journey, particularly when we are going to have most important event, this G20 summit in the September, I believe this should be all the time historic and exceptionally successful event, no doubt about it, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister. With these few words, I conclude. I have 2 lines. Ajay, please correct me. Up, sono, sauno, sauno, Hidaya, Hidaya Prabha, Abhar. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Thank you so much to our chief guest and his address and such an energetic speech. Thank you very much, sir. I would like to quickly say that due to paucity of time, we are not going to break for tea. So we continue this session. And for the closing remark, I request Shri Kulin Lalbhaiji to kindly come up, please. Definitely tough acts to follow, but Shri Sarbanan Sonowal ji, Shri Harsh Sanghvi ji, all these distinguished speakers on the dais and dear friends, on behalf of the CII, I would like to thank all of you for taking out time and sharing so much passion and wisdom in the talks that we heard today.